क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस हद तक तहकीकात कर सकती है? बिल्कुल कर सकती थी, और बल्कि मैंने ओपन हेयरिंग के लिए कहा था कि आप हमें ओपन हेयरिंग दें। देखिए, शायद मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ। आप पे ये एलिगेशन तो नहीं है कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। आप पे एलिगेशन ये है कि आपने जुडिशरी को मलाइक किया, जो कि मिसकॉन्डक्ट में आता है। ठीक, वो तो आप मान रहे हैं कि तकरीर की सिर्फ ये देखना है कि आपकी तकरीर जुमरे में आती है, लेकिन जो एलिगेशन है उसकी तरफ तो किसी ने तवज्जो नहीं दी कि वो एलिगेशन किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक गलत है। उसकी गलत है तो ही शुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, और अगर दुरुस्त है तो रिस्पॉन्सिबल, लेकिन सवाल ये कि कौन करेगा। लेकिन उन्होंने इंक्वायरी करनी थी ना इसमें। पहले तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस देना था कि ये एलिगेशंस हैं इनका, इसको आप कोई स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन कुछ नहीं किया गया। सो गुजारिश मेरी ये, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वेरी पावरफुल बॉडी। आप जरा 210 भी पढ़ लें आइन का। ये बिल्कुल सही है कि जरा देखिए, इसकी जरा मैंने अभी इसके जरा अल्फाज का चुनाव जरा देखिए। और कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्स अटेंडेंस ऑफ पर्संस, यस। नहीं, टेक्स्ट पढ़िए ना। फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर not pertaining to, it doesn't connect with the conduct of the judge. अब यहाँ widened up the scope. जरा पढ़े आगे। सर वो उससे कनेक्टेड नहीं, जरा चले पढ़ते हैं आगे। Council shall have the same power as the Supreme Court has to issue directions or orders for securing the attendance of any person or the discovery or production of any document, and any such direction or order shall be enforceable as if it had been issued by the Supreme Court. The provisions of Article 204 shall apply to the content powers. So it's a very powerful body. It can call anybody. That is what, in the context of inquiry, naturally, it has to be. It's not hearing a case. It's inquiry. So वो आपने जो इंक्वायरी कमीशन की बात की, तो ये खुद ही इंक्वायरी कमीशन है in a way. बिल्कुल more powerful than इंक्वायरी कंटेम्प्ट के पास भी इनके पास है। बिल्कुल सही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं submitted, the answer is Khan sahab, let me put my anxiety to you. Every Supreme Judicial Council is not the Supreme Court. It's a separate constitutional body. Agreed? Every constitutional body should have maximum autonomy to decide matters. Agreed? Thirdly, we don't want to encroach or say or do anything. It just so happens that I'm a member of the Supreme Judicial Council as well, but we create precedent as well, that it undermines the Supreme Judicial Council. Supreme Court is not a watchdog over. However, like every other constitutional body, when a constitutional provision or a fundamental right is being violated by anybody or not being considered, let's both ways, then the Supreme Court is the only court which has the power, or the High Court, not in this case, to direct that this be done. yes. So we have to be very careful how we proceed in this matter, because it will, like you are citing Justice Clark's case after 50 years, this will become precedent and it will be cited before us maybe earlier than 50 years. So we have to be very careful as to not disturb the perfect balance that the constitution makers have provided in the constitution. There is an intervening judgment 2018 की, उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे डिस्कस हुए हैं, और उसमें ये आया, उसकी हैसियत क्या है ये भी डिस्कस हुई है। मेरी गुजारिश है उस जजमेंट को जरा PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 538, I was counsel there again Shaukat Siddiqui's case. This is Iftikhar Chaudhry's case. This is PLD 2018. वो अच्छा, एक और जो आपका मैटर, नहीं ये नहीं का है, ये तो आप ही का केस है ना? जी वही। इसमें ये एस्पेक्ट, प्रोसीजर एस्पेक्ट्स बड़े डिटेल में डिस्कस हुए हैं। Which part you want to read from? जी अब मैं आपको वो जो है ना पता है नोट्स दूसरे वाले नोट्स में
पेज 5559 पे आ जाए। 538 से जनाब। पेज 5559 पे पैराग्राफ 51। My lord, my lords, am I needed for these proceedings? Or can I be excused for now? Is there something urgent? Yes, I have. There's a matter which I have to argue, not before. Okay, fine. ठीक है. But you must take Needed, notes. कोई बात हुई उनको बता देंगे. But you've noted the points, नहीं? I have. ठीक. Sir, this judgment is very thorough judgment discussing various aspects of Article 209. पहला जो point out करूंगा वो पेज 555 है, पैरा 46. जी. Historically, पैरा 46. page 555, Historically, जी. 46. Historically, the fundamental rights of the people require protection from the excess of the executive and the vested interest, both commercial and political. In order to safeguard the fundamental rights of the people guaranteed under the Constitution, the independence of judiciary obviously must be insulated from the onslaught of the executive and such vested interests who are past masters at institutional capture. Thus, the security of tenure of judges, more so those of the superior courts, is imperative, and therefore adequate safeguards in this behalf are provided, including by enacting what appears to be a rather cumbersome and strict process of their removal. This cardinal principle is reflected in the constitutional dispensation of all the democratic countries, people by the citizens and not subjects. The exception in this behalf are almost always found in... Fine, you don't need to say this, it's obvious, जी. नहीं सर, एक ये बात जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो जनाब देखिए पेज 559, ये जरा पैरा 51, ये जरा जरूर देखिए पेज 559 पैरा 559 पेज पैरा 51. The relevant provisions of the Constitution, more particularly Articles 209, 210 and 211, when examined in the light of the judgment handed down by a larger bench of this court in the case reported as Chief Justice of Pakistan Iftikhar Muhammad Chaudhary, and the previous pronouncements on the subject noted and quoted with approval in the aforesaid judgment, the relevant portions whereof have been reproduced in extenso herein above, should reveal that, firstly, the SJC is a unique forum created by the Constitution. Secondly, the SJC is not a court, though it may exhibit some of its trappings, including the power to punish for contempt. So it is not a court. Yes, year 2010 की judgment भी है. Thirdly, the proceedings before SJC are essentially a fact-finding inquiry, sir. This is what I am submitting here. This is the function of the SJC. Fourthly, the SJC is akin to a domestic forum and it conducts administrative proceedings regarding the question of conduct or capacity of a judge who is to be judged by his own peers. Fifthly, the findings of SJC are recommendatory in nature and do not enjoy the status. So, yes, agreed. What is the point you want to make? I'm trying to make here it's a domestic forum. Your Worship was saying that it's just like as if it is some kind of a rival court to Supreme Court. No, it is a domestic No, body. it is not. It's a constitutional body. It's a constitutional body. So, what happened in this case? Why did you come to court? What relief did you get or not get? इसका primary function जो है वो इंक्वायरी है. नहीं, ये फैसला जो आप साइड कर रहे हैं, ये क्यों आया आपका केस सुप्रीम कोर्ट में? ओपन इंक्वायरी केस क्यों आप लाए सुप्रीम कोर्ट ये वाला? ये इसलिए कि हमने कहा था कि इस केस में कि हमारी ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा नहीं, इट शुड बी इन फोरम. इस केस में फिर तो आप ये ग्रीवेंस दोबारा एजिटेट नहीं कर सकते हैं ना हमारे सामने. नहीं, बात क्या हुई, इसमें उन्होंने अलाउ कर दी ओपन इंक्वायरी. This judgment allowed open inquiry subject to certain conditions. वो पैराग्राफ किधर है?